Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm Miss Ulfat Amin, PG Pediatric Nursing, Diploma in Nursing Administration. Today in this video, I will be discussing nursing standards. Introduction. Uh, what's a standard? Standard is a benchmark, or we can say it's a predetermined baseline or condition, or we can say it's level of excellence that comprises a model to be followed or practiced, or we can say it's a measurement tool for performance appraisal. If we talk about our daily life, yeah, or we can say our daily routine, we go to shopping. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई कोई जूता लेता है या कोई कोई भी कपड़े लेता है तो हम उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड ढूंढते हैं. मींस स्टैंडर्ड है एक ऑलरेडी एक लेवल ऑफ एक्सलेंस प्री डिटरमाइंड होती है, तो हम उस लेवल के साथ अपनी चीज़ को या अपनी प्रैक्टिस को कंपेयर करते हैं. तो वो जो लेवल ऑफ एक्सलेंस है, और वी कैन से दैट बेंच मार्क ऑफ अचीवमेंट, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी एक्टिविटीज़, एक्शंस, रूल्स और regulations designed to provide policies within a support structure and specific direction. They are very important in an organization because they provide rules, they provide actions, and they regulate the personnel working in an organization. Nursing standards. What are nursing standards? If we talk about the nursing profession, along with the privilege of providing professional healthcare services to the consumers, the professional nurses have a similar degree of responsibility and accountability to follow ethical principles and standards of care that are integral to the nursing profession. So it's preferable for the nursing profession to incorporate certain ethical and legal principles, or we can say protocols, into practice to ensure that the patient who is consumer of nursing, or we can say who is the client to whom we are giving nursing care services, receive safe, sound and appropriate nursing care. So nursing standards help to plan, implement and assess the quality of services, and show that nursing is accountable to society and to consumers, to government, as well as to the profession of nursing itself. They reflect a desired and achievable level of performance against which actual. तो जैसे कि हमने पहले बोला कि स्टैंडर्ड में एक पहले ही प्री डिटरमाइंड मॉडल प्रैक्टिस रखा हुआ होता है. तो अगेंस्ट दैट वी हैव टू कंपेयर आवर एक्चुअल परफॉर्मेंस, सो दैट हमें पता चले कि वी आर लैगिंग, या वो हमें गाइड करता है, प्रमोट करता है कि आप अपने कस्टमर्स को कैसे क्या दोगे बेटर, सेफ एंड अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर. Now the importance of the standards. They are the established criteria for the practice of nursing. जैसे कि अभी हमने बोला कि पहले ही एक प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया होता है जिसके हिसाब से हमने जाना होता है, जिसके हिसाब से हमने प्रैक्टिस करनी होती है. आउटलाइन व्हाट द प्रोफेशन एक्सपेक्ट्स ऑफ इट्स मेंबर्स. इट प्रमोट्स स्टैंडर्ड्स, गाइड्स, डायरेक्ट्स नर्सिंग प्रोफेशनल्स and nursing practice, and they are important for self assessment. How they help in assessment, because जब हमें कोई स्टैंडर्ड रखते हैं कि हाँ जी ये वाला, फॉर एग्जांपल हम किसी प्रोसीजर की बात करेंगे, ये प्रोसीजर हमने इस स्टैंडर्ड के हिसाब से करना है, तो हम क्या करते हैं, हम एसेस करते हैं कि वेदर ये प्रोसीजर इन्हीं स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हुआ है कि नहीं. तो हम असेसमेंट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस की, या इवेलुएशन करते हैं, या कभी कभी क्या होता है जो हमारे एम्प्लॉयर होते हैं या क्लाइंट्स होते हैं या कभी कभी स्टेक होल्डर्स भी एसेस करते हैं. कुछ हॉस्पिटल्स में पॉलिसीज़ होती है, लाइक जब उनके पेशेंट्स डिस्चार्ज होते हैं
हैं तो वहाँ पे एक क्या होता है असेसमेंट ये टूल होता है, तो वो हर एक चाहे अटेंडेंट या पेशेंट को दिया जाता है एट द टाइम ऑफ द डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल की। तो उससे क्या पता चलता है कि रिगार्डिंग नर्सिंग केयर होता है, रिगार्डिंग मेडिकल केयर होता है, रिगार्डिंग द इक्विपमेंट्स, रिगार्डिंग द फैसिलिटीज़ अवेलेबल। उससे उनको पता चलता है कि कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या वो उनको गाइड करता है कहाँ पे हमें अपनी सर्विस को एनहेंस करना है, ठीक है। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स एंड उससे क्या होता है क्वालिटी फिर इम्प्रूव हो जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन की। और इससे क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन जो है नर्सिंग केयर की होती है, नर्सिस में जो है अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? देखो अगर एक हॉस्पिटल की पॉलिसी है कि हाँ डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी, दैट इज़ द सेट स्टैंडर्ड। तो अब अगर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होती है, कभी कभी क्या होता है कुछ अटेंडेंट्स क्लेम करते हैं कि रेप्लिकेशन ऑफ मेडिकेशन हुई है, कुछ करते हैं कि मेडिकेशन नहीं मिली है या कोई प्रोसीजर नहीं हुआ है। तो वाइल अगर एक नर्स ने जो ऑन ड्यूटी हो उसने ये डॉक्यूमेंट किया हुआ, तो उसके लिए ये एक प्रूफ बन जाता है, ये उसको अकाउंटेबल बनाता है, आंसरेबल बनाता है। प्रोवाइड्स नर्सेज विद फ्रेमवर्क ऑफ डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज, और जो हमारी नर्सेज है उनकी कॉम्पिटेंसी इस चीज़ से बढ़ जाती है। नर्सिंग स्टैंडर्ड्स के प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स शुड बी डिज़ाइन टू अचीव अ स्टेटेड पर्पस। जब भी आप फ्रेम करोगे बीइंग ए हेड नर्स, बीइंग ए मैनेजर, बीइंग ए सुपरवाइजर, स्टैंडर्ड अपने वार्ड के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आपने क्या यू हैव टू कीप इन माइंड दैट देयर मस्ट be a purpose while setting the standards. Standards should be based upon the clear definitions, a professional scope and accountability होनी चाहिए. Standards should be sufficiently broad and flexible. तो कभी कभी क्या होता है कुछ situations ऐसी arise हो जाती है जिनकी वजह से हमें changes लाना ज़रूरी है। तो at time हमारे standards ऐसे होने चाहिए जब हम उनको फ्रेम करें, तो जब भी हमें ज़रूरत पड़े उनको उनमें कुछ चेंज लाने की, तो वो फ्लैक्सिबल होने चाहिए, उनमें फ्रीडम होनी चाहिए इनोवेशन की या ग्रोथ या चेंज की। दे आर ए सोर्स ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर द नर्स प्रैक्टिशनर। जैसे मैंने अभी बोला फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंटेशन अगर हम मेंटेन करेंगे तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बनता है। स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड द पेशेंट विद द मीन्स ऑफ मेजरिंग द क्वालिटी केयर। और जो हमारे ये है पेशेंट्स, तो उनको पता चलता है कि जब हम एज पर सेट स्टैंडर्ड्स काम करते हैं तो उनको पता चलता है कि what type of the care, or we can say quality care they are receiving. A deviation from the protocol should be, हाँ कभी कभी क्या होता है कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें प्रोटोकॉल से डिविएटेडली करने पड़ते हैं या कभी कभी आउट ऑफ प्रोटोकॉल्स करने पड़ते हैं। उस टाइम पे एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वो नोट डाउन करे कि ये डिविएशंस क्यों हैं इस चीज़ में, ठीक है। Now the sources of the nursing care standards. The nursing care standards can be established, developed and reviewed, or we can say enforced by a variety of sources like professional organizations. We have for example our Trained Nurses Association of India, or we can say Nursing Research Society of India, and our licensing bodies, or we can say statutory bodies like Indian Nursing Council or state nurses registration councils. We have Medical Council of India, we have, or different universities, they also frame standards. Various institutions like we have National Institute of Health and Family Welfare, or some health centers, some university hospitals, they also frame standards. Department of institutions like nursing department frames their own standards. Patient government units like at national level, state level and local levels, they frame their own standards. And individuals like some administrative heads, on the basis of the personal experiences, they too can frame the nursing standards. Now the classification of the standards. The standards can be classified in many ways, like
Now, standards according to the quality, they are normative and empirical standards. If we talk about the normative standards, word norm means standard for evaluating or making judgments about some behavior, or we can say some outcome. So normative standard deals with what is normally done or what others do in practice. Or we can say normative standards describe practices that are good or ideal by some authority, like we have Trained Nurses Association of India. Empirical standards are what practices actually observed in large number of patient care settings, or what has been done or found to be true from observations, or we can say from experiments, like INC frames those kind of standards. Now, according to the infrastructure, if we talk about infrastructure, there are structural standards first that involve the setup of institution. For example, अगर हम देखेंगे एक इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो एडिकेट है, वो लेवल है, तो अकॉर्डिंगली वो फ्रेम करेंगे अपने स्टैंडर्ड्स एज पर दियर इंफ्रास्ट्रक्चर, और अकॉर्डिंगली वो केयर प्रोवाइड करें, क्वालिटी केयर वी कैन से. Process standards. Process means those standards that are framed for the behavior of the nurse at a desired level of like एक नर्स जो एक केयर देती है पेशेंट को, जो केयर डिलीवर करती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि वो किस हिसाब से कौन सा प्रोसीजर करेगी, कौन सी टेक्निक फॉलो करेगी, कौन सी रेजिमेंट या कौन सी प्रोसेस वो यूटिलाइज करेगी बाय द केयर पेशेंट केयर वी कैन से. तो वो है प्रोसेस स्टैंडर्ड्स. एंड आउटकम स्टैंडर्ड्स और वो लाइक दोज वेरी standards that are result oriented, or we can say that, or based on the results of the actions. This can also be defined as a result of a nursing intervention. जो भी nurse intervention देगी, like उसके बेसिस पे आउटकम क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट. फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है डायलिसिस पेशेंट, तो उसके लिए स्टैंडर्ड फ्रेम करेंगे कि अगर नर्स ऐसे ऐसे एक्शंस देगी तो आउटकम ये होगा, ठीक है. तो दैट आर आउटकम स्टैंडर्ड्स. देन on the basis of result oriented or ends and means. And standards are patient oriented. They describe the change as desired in the patient's physical status or behavior. And standards to get information about the patients. So simply, and standards, they are patient oriented. They describe the change as desired in patient's physical behavior. And mean standards or nursing oriented, they describe the activities and behaviors designed to achieve the positive results, like by which means we can get the positive results. Now, the what's the legal significance of the standards? If nurses do not perform duties within accepted standards of care, they may place themselves in jeopardy of legal action. Some of the actions given are failure on the part of nurses in providing standards, like failure to observe medication action, or adverse side effects, sometimes failure to prevent infection, failure to perform a nursing treatment or procedure properly, failure to provide a safe environment to the patient, sometimes failure to obtain a complete nursing history, or failure to adhere to the hospital policies can be there, failure to apply restraints in a proper way. like मतलब हर एक चीज़ के लिए अपने अपने स्टैंडर्ड्स है. तो अब अगर वो एज पर दैट स्टैंडर्ड्स काम नहीं करती है, शी विल बी sued. Or we can say failure to use equipments properly, failure to make prompt accurate entries in patients medical records. There are so many observations or actions where she can be sued if she didn't follow the proper standards. Thank you. This was all about this presentation. Allah Hafiz.